आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज का विषय रहेगा हमारा जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ x प्लस आयोटा y टू द बेस e exponential, right? So as we discussed in the last video, how to find out the principal value of log of x plus iota y to the base e. We know that e raised to the power iota theta is equal to cos of theta plus iota times sine of theta. This is nothing but it was the identity which was given by Euler's and known as Euler's identity. ठीक है, तो e raised to power iota theta plus 2 pi क्या हो जाएगा? Using this Euler's identity, it will be cos of theta plus 2 pi plus iota times sine of theta plus 2 pi. And we know that cos and sine are periodic functions having period 2 pi. So cos of theta plus 2 pi is again cos of theta. Similarly, using the fact that sine and cos are periodic functions of period or having period 2 pi. ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे रीजन. So this is nothing but it is same as e raised to the power iota theta. So similarly, e raised to the power iota theta plus 2n pi is also equal to e raised to the power iota theta. You can verify by yourself. इसको आप verify कर सकते हो. E raised to the power iota theta plus 2n pi is also equal to e raised to the power iota theta. So we shall make use of this fact in finding the general value of log of x plus iota y to the base e. So log of x plus iota y, as we know, can be converted r e raised to the power iota theta, right? So we can replace this e raised to the power iota theta by r e raised to the power iota theta plus 2n pi. So log of x plus iota y is equal to log of r e raised to the power iota theta plus 2n pi, right? So using the identity of logarithmic, we can write it as log of r to the base e, right? Don't forget to write or add base e plus log of e raised to the power iota theta plus 2n pi to the base e. So it is nothing but log of under root x square plus y square to the base e plus iota theta plus 2n pi log of e to the base e, right? Using the identities of logarithmic function. So we know that it is always equal to 1. It is always equal to 1. So it is equal to 1 by 2 log of x square plus y square to the base e plus iota theta plus 2n pi. Since log of e to the base e is always 1, so it is equal to 1 by 2 log of x square plus y square to the base e plus iota theta plus
iota 2n pi, and we are aware of this fact, it is equal to, this is nothing but प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या है, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, और ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस किसका, आयोटा 2n पाई का, वेयर n is integer, right? And this is denoted by log of x plus iota y to the base e। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, log विद कैपिटल L, ये यूज किया जाता है जनरल वैल्यू के लिए। अगर यहाँ पे सिंपल स्मॉल l होता, कैपिटल की जगह अगर स्मॉल लेटर होता l, देन दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर एग्जाम में पूछा गया है कैपिटल L, इसका मतलब दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log of x plus iota y to the base e। अगर स्मॉल l लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है log of x plus iota y की। सो इट इज नोन एज जनरल वैल्यू ऑफ log of x plus iota y to the base e। सो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। डिफरेंस क्या रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या ऐड करना है हमें, आयोटा 2n पाई। तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, टू फाइंड, यहाँ पे क्या लिखना है, नोट टू फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ द logarithm of any complex number add 2n pi iota to the principal value of the logarithm of that number। ठीक है, यही लिखा हुआ है, जो यहाँ पे मैंने किया है प्रूव रिजल्ट, उसी को मैंने यहाँ पे इन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको जनरल वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको ये जनरल वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में आप सिर्फ ये ऐड करना है, कौन सा वाला फैक्टर, आयोटा 2n पाई या फिर 2n पाई आयोटा, वही लिखा है। टू फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ द लोगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड दिस फैक्टर और ऐड दिस टर्म 2n पाई आयोटा, ऐड दिस टर्म 2n पाई आयोटा। ठीक है, add this term 2n pi iota of the to the principal value of the logarithm of that number। इसी रिजल्ट को मैंने इन वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे।